Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. जोमैटो का शेयर इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस शेयर में पैसा लगाने वाले निवेशक कंगाल हो गए हैं। अपने उच्चतम स्तर से ये शेयर 70% से ज्यादा गिर चुका है। जोमैटो में गिरावट के ट्रेंड को देखते हुए इस शेयर को लेकर तरह तरह के मीम्स भी बन रहे हैं। इसके अलावा पिछले साल कुछ बाजार के दिग्गज लोगों ने जोमैटो को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी, जो सच भी साबित हुई हैं। जोमैटो पर भविष्यवाणी करने वालों में स्टॉक गुरु अश्वथ दामोदरन का नाम भी शामिल है। अश्वथ दामोदरन ने पिछले साल जोमैटो पर भविष्यवाणी की थी। जुलाई 2021 में अश्वथ दामोदरन ने कहा था कि जोमैटो के शेयर का भाव 41 रुपए पर गिरेगा। एक साल के भीतर ही उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। अब दामोदरन ने जोमैटो पर फिर नई भविष्यवाणी की है। अब अश्वथ दामोदरन कह रहे हैं कि जोमैटो के शेयर का भाव अभी और गिरेगा। जोमैटो के शेयर का भाव 35 रुपए तक गिर सकता है। अभी जोमैटो के शेयर का भाव 45 रुपए है, यानी मौजूदा भाव से जोमैटो 20% और टूट सकता है। जोमैटो के शेयर के पीछे दामोदरन की अपनी थ्योरी है। क्या है वो थ्योरी, आइए आप भी सुने। In the aftermath of my valuation of Zomato, I got a great deal of pushback. Half of it came from people who thought I was being far too optimistic, attaching these large revenues and profits to an untested company, a company that had never made money before. The other half believed I was being far too pessimistic, that I wasn't factoring in the potential revenues from grocery deliveries and the value of the platform itself. At some point, I decided that the best thing to do, rather than contest each person on their arguments, was to let people choose their own stories and valuations of Zomato. So in a follow-up post, I let people pick their own stories. Stories about what market Zomato was going after, what the market share for Zomato would be, what slice of the overall gross order value would stay with Zomato, profit margins, cost of capital. The end result is I got a range of values from a low value of 16 rupees per share to a high of 150. Now, not all of these stories are equally plausible, so I broke these stories down into plausible, probable, and so if you look at plausible stories, it is plausible that you could tell a story that could give you a value of 150 rupees, but you're pushing the limits of what's possible. The probable stories, I argued, gave a value closer to 40 to 50 rupees, perhaps a little higher than 50, but I could not see a way to stretch these stories to come up with 100 rupees per share or 150 rupees per share. अश्वथ दामोदरन ने कई तरह की थ्योरी बताई हैं और बताया है अलग अलग थ्योरी अलग अलग जोमैटो पर लागू की जाएं। अलग अलग थ्योरी अगर जोमैटो पर लागू की जाएं तो कंपनी के शेयर का भाव कितना हो सकता है। कुल मिलाकर दामोदरन अपनी थ्योरी से बता रहे हैं कि जोमैटो में पूरा वैल्यूएशन गेम चल रहा है। वैल्यूएशन के झांसे में आकर ही निवेशक जोमैटो में ऊपरी स्तरों पर फंस गए हैं। अश्वथ दामोदरन ने जोमैटो के लिए बैड न्यूज भी गिनवाई हैं। If you go back a couple of pages and look at revenues and gross order value, notice that the slice of gross order value, that's revenues, has dropped from 21 to 17%. That's a pretty big drop. That part of the drop is because of increased competition, part comes from higher delivery costs, and part of it comes from Zomato's entry into newer markets, a grocery delivery market where you get a smaller slice of revenues. In addition, the growth has come in fits and starts, and given that Zomato is a very active acquirer of other companies to incorporate into their business model, it's not clear how much of this growth is organic. In other words, Zomato is creating it with its own investing, and how much of it is acquired. And finally, there is some bad news on the legal front. The Indian government recently put both Swiggy and Zomato on notice that they might be violating antitrust laws and they could face action in the future. Now, there's more bad news. If you look at the revenue growth, it looks good, but if you look at the expenses, they're growing even faster than the revenues. The cost of goods sold increased by 128%. Now, why does it matter? When young companies grow, one of the things that pushes them towards profitability is economies of scale. And where do economies of scale show up? It's your cost of goods sold grow at a slower rate than your revenues. Your expenses grow at a slower rate. That's not been true for Zomato, at least in the last year. So the operating margins are actually getting worse. The net margins are getting more negative as they go through time.
अब आपको बताते हैं जोमैटो पर भविष्यवाणी करने वाले अश्वत्थ दामोदरन कौन है। अश्वत्थ दामोदरन स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं। उनको डीन ऑफ वैल्यूएशन के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में वो फाइनेंस के विजिटिंग लेक्चरर रह चुके हैं। लॉयला कॉलेज चेन्नई से उन्होंने बीकॉम किया। IIM बेंगलुरु से उन्होंने मैनेजमेंट में PG डिप्लोमा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से MBA और PhD की है। अश्वत्थ दामोदरन को वैल्यूएशन का मास्टर माना जाता है। वैल्यूएशन के दम पर ही उन्होंने जोमैटो के शेयर पर भविष्यवाणी की थी। अब एक बार फिर अश्वत्थ दामोदरन ने भविष्यवाणी की है। अब देखना होगा कि उनकी ये भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठती है, लेकिन फिलहाल छोटे निवेशकों को जोमैटो से दूर ही रहना चाहिए।